नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान संवाद में। और राजस्थान संवाद में जिस तरह से हम देश के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं और बहुत से बौद्धिक पैनलिस्ट्स के साथ उन मुद्दों पर ऐसी चर्चा करते हैं जिससे आपके समक्ष वो मुद्दे आसानी से समझे जा सकें, उन पर पूरा विश्लेषण हो और उन पर पूरी चर्चा हो। और ऐसा ही देश में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जहां पर कार्यपालिका और जुडिशरी जो है वो एक तरह से रस्साकसी वाली सिचुएशन में आ चुकी है। और ये पूरा मामला है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर। एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी उपराष्ट्रपति लेवल से लेकर और कई लेवल्स पर हो रही है। ऐसे में क्या होना चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का तरीका, किस तरह से होने चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही एमिनेंट पैनल है जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी हैं जो कि कार्टर संस्था के डायरेक्टर हैं। और बहुत ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का जो वक्त है वो विधि शिक्षा में गुजारा है और विधि को पढ़ने और पढ़ाने में गुजारा है। हालांकि अभी भी वो अपने आप को विधि का छात्र कहते हैं, पर उनके छात्र जो हैं वो जजेस, वकील और हर लेवल पर हैं। और उसी के साथ मेरे साथ जस्टिस डॉक्टर विनीत कोठारी भी हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी के अंडर ही पीएचडी किए हैं और फॉर्मर हाई कोर्ट जज हैं और जोधपुर के निवासी हैं। बहुत कीन इंटरेस्ट जो है वो उनका एकेडमिक्स में रहा है, जुडिशियल स्टडीज में भी रहा है। ऐसे में वो भी कई सारे सवालों में के जवाबों में हमारी मदद करेंगे। और उन्हीं के साथ हमारे समक्ष रज्जाक के हैदर भी हैं जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और काफी सारा काम वो कर रहे हैं। काफी सारी उन्होंने आरटीआईज भी लगाई हैं, उस पर भी बहुत सारा काम किया है। ये तमाम सारा पैनल हमारे समक्ष है ये जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है वो क्यों हो रही है और आखिर इसकी वजह क्या है। इस पूरे डिस्कशन को हम दोनों ही भाषाओं में रखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी, ताकि आपको आसानी से इसका मर्म समझ में आ सके। सो फर्स्ट आई एम कमिंग टू Justice Sir. Sir, do you think the present procedure of appointment via collegium is fine and fair selections are done? Collegium का ये जो तरीका है क्या वो सही है और इससे क्या जो सिलेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है? जस्टिस डॉक्टर विनीत कोठारी सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। थैंक यू वरुण जी। आपके सवाल में दो सवाल हैं। अभी क्या सिस्टम है और वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट द्वारा जज मेड लॉ से हुआ 1992 में प्रारंभ, और उसके बाद एनजेसी एक्ट 2015 में जब लाया गया यूनानिमस रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट से, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले से निरस्त किया। तो आज की तारीख में लॉ ऑफ द लैंड तो आर्टिकल 141 के हिसाब से यही है कि कॉलेजियम सिस्टम ही है उपलब्ध और वही चलेगा जब तक कि और कुछ नया नहीं होता। बट दूसरा सवाल जो है वो थोड़ा टिकलिश सवाल है। क्या सब कुछ उसमें सही है? क्या वो परफेक्ट सिस्टम है या और कुछ हो सकता है? मेरा ये मानना है वरुण जी और प्रोफेसर भंडारी साहब, हैदर साहब और आप सभी से और ऑडियंस से भी, मेरी समझ में कॉलेजियम सिस्टम ठीक तो है, पर कहीं ना कहीं कुछ अपॉइंटमेंट सिलेक्शंस में मेरिट को दरकिनार करके जो कार्यवाही हुई, सिलेक्शंस हुए, वो एक थोड़ा प्रश्न चिन्ह सिस्टम पे खड़ा करता है कई बार। तो इसकी जो सॉल्यूशन है वो अब धीरे धीरे सामने भी आ रहा है। जैसे आपने पिछले कुछ स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के देखे होंगे, उन्होंने रीजंस देना प्रारंभ कर दिया है। जो सिलेक्शन रिकमेंडेशन करते हैं वो रीजंस देते हैं कि हमने, जैसे अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेना है तो हमने उनके जजमेंट देखे हैं, उनका इंटीग्रिटी चेक किया है, आईबी रिपोर्ट सब देखते हैं वो लोग। तो वो सब होने के बाद अगर ये ट्रांसपेरेंसी अच्छी मेंटेन रही और अगर इसमें
फेवरेटिज्म या जिसको हम नॉर्मल भाषा में भाई भतीजावाद कहते हैं, उसका अगर नहीं हुआ, ये किस्सा आगे नहीं चला, तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम वर्क कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो बेसिस रहा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये रहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रखने के लिए आर्टिकल 50 में जो लिखा गया है, उसके लिए ये प्रोसेस ही रखना जरूरी है। नहीं तो हम जैसे देखते हैं जुडिशरी में, मैंने भी कुछ साल बिताए हैं, कि जैसे आप एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल या गवर्नमेंट काउंसिल्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, अगर पॉलिटिशियंस के हाथों में सारी व्यवस्था चली जाए या पार्टली भी चली जाए, तो उसमें क्वालिटी का शायद मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज और ज्यादा हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि मेरी राय में, विनम्र राय में, कि जो सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। एक बात जो मुझे कहनी है, और मैं विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूँ, कि मेरिट के अलावा जो रिप्रेजेंटेशन टू कास्ट, कलर एंड क्रीड, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पर्टिकुलरली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट की बात करें, क्योंकि कॉलेजियम उसी के लिए कंसर्न है, बाकी डिस्ट्रिक्ट जजेस तक का तो अपॉइंटमेंट रिटर्न एग्जाम से होता है, बाकायदा उसका प्रोसीजर है। तो ये जो है, इसमें रीजनलिज्म कह दीजिए, रिप्रेजेंटेशन टू बैकवर्ड सोसाइटी कह दीजिए, या ये जो फैक्टर्स कई बार पॉलिटिशियंस भी बात करते हैं, वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, पर उसमें मेरिट को इग्नोर मत करिए। अगर कोई गरीब तबके का या निम्न जो जाति हम समझते हैं हिंदुस्तान में प्रेवलेंट रही है, इतने वर्षों से तो दूर जाने वाली नहीं है, अगर मेरिटोरियस बंदा है या औरत है या जो भी है, सम्मान्य वकील साहिबा या डिस्ट्रिक्ट जज है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें मेरिट से बिल्कुल वो है, उनको भी मौका मिले। पर सिर्फ इसलिए कि हमको उन कास्ट से, उस रिप्रेजेंटेशन से कुछ जजेस लेने हैं, तो फिर आप उनका रिकमेंडेशन भी करते हैं, और गवर्नमेंट भी उसको चाहती है, वो अपने पॉलिटिकल रीजन से चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के क्वालिटी में खराबी हो रही है। और अगर 10% भी मैं समझता हूँ ये काम हो रहा है, तो इंस्टीट्यूशन की इमेज, जैसे कहते हैं ना, वन बैड फिश इज इनफ टू स्पॉइल द पॉन्ड, उस तरह से होता है। तो जो एक्सपीरियंस से मैं समझ रहा हूँ कि अगर मेरिट और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी, तो कॉलेजिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकता है। और आज की तारीख में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग है, इसलिए जो बात आपने कही कि वाइस प्रेसिडेंट साहब और ये लॉ मिनिस्टर साहब ऐसे कहते हैं भाई ये सिस्टम मॉडिफिकेशन मांगता है, तो आप एमओपी क्यों नहीं फाइनल करते? एमओपी आपके पास पेंडिंग है, उसको फाइनल करवाइए। तो वो ये जो बातें हैं, ये पॉलिटिकल लेवल से इस तरह नहीं उठनी चाहिए अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ जजमेंट के खिलाफ बात, जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट आप तो खुद सीनियर एडवोकेट हैं और रहे हैं, उनको इस स्तर की बात हो, तो उन्होंने बेसिक फीचर को क्वेश्चन कर लिया कि बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है। केशवानंद भारती में 13 जज ने बैठ के कहा है, तो आप उसको क्वेश्चन करने का कोई समय भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। तो with all due respects to him, he could not have perhaps raised this kind of comment. And in my humble opinion, the system can continue with certain modifications, certain improvements. First blush reaction is this. सो ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर ये 4 पिलर्स इसीलिए बनाए गए थे ताकि लोकतंत्र का ढांचा जो है वो पूरी तरह से मजबूत रहे। और सवाल जब से उठने लगे, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होना ही कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर ऐसे सवाल उठा रहा है कि लोकतंत्र का वो जो मर्म है वो कहीं होता जा रहा है। और ऐसे में एक मुद्दा उठता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, क्यों उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, और क्या उसका इंट्रोडक्शन एक सही कदम था या नहीं था। तो इस सवाल पर मैं प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार भंडारी सर आपके पास आना चाहता हूं कि डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज अ राइट स्टेप, एंड वाज इट प्रॉपर फॉर सुप्रीम कोर्ट टू स्ट्रक डाउन एनजेएसी? क्योंकि कई सारे पक्ष जो है वो एनजेएसी के पक्ष में है, और कई लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का उसको स्ट्रक डाउन करना क्या ठीक था? Thank you, Varun, for organizing this very, very important and significant dialogue on the judicial appointment from confrontation to consensus. Today, I think the most burning issue in India is how the judicial appointments are being made, and whether the collegium system as introduced by the Supreme Court in 1993 in second judge's case by a bench of 9 judges. Earlier it was not there, and still
there is no provision in Article 124 or 217, that is for High Court. 124 is for Supreme Court appointment of judges. There is no such provision. It is self-introduced by Honorable Supreme Court. I have listened carefully the views of Honorable Justice Dr. Vineet Kothari ji. As you said, he did PhD with me. I think it was an honor for me that he reposed confidence in me that I can guide him and not misguide him. So thank you for that. Now coming to the collegium system and NAGS, NJEC, National Judicial Appointment Commission. Please forgive me for my frank views. And whatever views I'm giving with some logic. One may agree or not. In democracy, the right to dissent is a fundamental right. So first of all, the whole system of collegium, as Honorable Justice Kothari ji rightly said, as of now it is a law declared by the Supreme Court, and we are running under this law when it is the matter of appointment. But I have studied, and I will tell you later, the constitutional provisions of almost 7-8 countries, leading 8 countries, and nowhere I found that judges appoint themselves. Prima facie, it is against the principles of the natural justice, which are very dear to the court. Most of the decisions of the court are based on natural justice. So the natural justice means that there is a bias. And when it is a bias, it is an institutional bias also. So appointing judges is a case of institutional bias. And moreover, why our Honorable Vice President became so vocal? There may be political overtones. I am not going into that. Or why the law minister became so vocal. The reason was, and though that was not in a good taste, I don't support the way in which they have made statement in public, and that does not augur well with such high positions. But the reason is that honorable judges have started almost dictating. Recently, the Supreme Court yesterday only said that if you do not accept our recommendations, we will take stern actions. I don't know what will be the stern actions, except passing the strictures or passing the judgment. Point is, how judges alone can appoint judges? Why not there is a consultation? It was there earlier, but now they say in second judge's case where they introduced collegium, they said consultation means concurrence. Consultation means consultation, not concurrence. So they said basic structure, so it is a basic structure. You know my thesis, which is perhaps the only thesis in the country which goes against the concept of basic structure. But anyway, that is a separate issue. So when it comes to NAJC, National Judicial Commission, which was introduced by amending Article 124, a new Article 124A and 124B were added. The Chief Justice, by ex officio, would be the chairperson of that commission. And then there will be leader of opposition, prime minister, and all they will discuss and they will appoint. To me, there could have been some more changes with better consultative process, but this commission was a right step toward democratization of the appointment process. I would say democratization. Today, it is solely in the hands of the 5 honorable judges who form the collegium. At High Court, they recommend, and finally, the appointments are recommended by the Supreme Court collegium consisting of the CJ and 4 senior judges in order of seniority. So they decide who is fit, who is meritorious, who is not meritorious. No application is invited. Nobody knows whose name has been recommended, why it has been recommended. Now they are talking about transparency, as Honorable Justice Kothari said, that they want to give the reasons and all that. But otherwise, till now, nobody would ask them, it doesn't come under the RTI. You cannot ask, sir, we want to see your recommendations and reasons for the recommendations. So it was totally opaque procedure.
One fine morning, you will see that these names have been recommended. And if the government returns some of them, honorable judges get infuriated. Recently, in the matter of Kripal, the government has its own reservations. I don't support or oppose that he is a gay. He has openly declared that he is a gay. He has a foreign friend as his close friend, or maybe perhaps his wife, I don't know. Excuse me if I'm wrong. So government says we have our own concern in approving such names. But the Supreme Court has again said that no, you have to appoint him. This is our dictate. I think there is a separation of power. And each organ is independent in their own field. Honorable Justice Kothari said that maybe because of independence of judiciary, that they struck down, and yes, they said in the Supreme Court Judges Association case, 2016, that it violates basic structure. National Judicial Appointment Commission violates basic structure. I wonder how it affects independence of judiciary. Do you mean in America, where judges are appointed for last more than 200 years, only 9 judges, not even 10th, 9 judges appointed by president, their appointment is approved after a rigorous hearing by Senate, the upper house, as we have Rajya Sabha, and president appoints anybody he appoints. It may be a professor of Harvard, or it may be a district court judge, or anybody. Do you mean there is no independence of judiciary in USA for last more than 200 years? Or are the judges influenced by the president who appoints them? No. Once they appointed judges, they do not care for anybody except the Constitution. Whosoever the president may have been, whosoever appointed them. So my submission, with all due regards, I have studied so many constitutions. I think we should have a constitutional body duly established under the Constitution of India, which should do appointment after following a due procedure of law. There could have been applications, yes. If Rajat thinks that I am competent, he has a right to send his CV or application. This is what being done in England. The Commission, Judicial Appointment Commission, invites applications, give them hearing, give them interview, and then you judge. You pick some names maybe based on some information from your brother judges that we do not know how they pick the names. And then you decide that, yes, these people are very competent, and so they may be appointed. And they dictate the government that you have to appoint them. I'm sorry, I don't agree with this system. With all due regards to honorable judges. No, just one intervention, sir. You Please, have, please. of course, a right to take other view, because these both views are very, very prevalent. They are being discussed on all the forums. The thing is that possibly we can't ignore the fact that even in this process of collegium appointing judges, there is definitely a consultation process, in the sense that government has to give its inputs. There have been cases where the government, on valid reasons, have turned down the files and have sent back the files, not appointing, and collegium had to agree. They have taken back those names. So it all depends. So suppose you are in a meeting of NJSC, if NJSC was there, what would have happened? Both sides on their own material, or whatever, how they have assessed the merit, etc., they would have had a chance to discuss that and then finally recommend a name. But this process of consultation is happening even now in NJSC system. It's not that nothing is happening. Judges pick up and then thrust up the names on the government is not happening. Please mind it that the practical aspect of the collegium system has government's important role in that even now. Sir, The thing is, yeah. Yes, you can kindly. You can. Sir, what I wanted to say is that this NJC was struck down. Whether the judgment is right or wrong is not, perhaps cannot be commented now, because that's a constitutional bench judgment, is binding on all of us. So system is there to stay. What we can talk possibly as law persons, or as professors, or former judges, or advocates, or journalists, whatever, is that how the system can improve so that better judges are appointed.
Ultimately, what we want, good judges in good institution, so that justice dispensation improves. There are no delays as far as possible. Though for delay, there is a altogether different debate that for delay, even the size of the judiciary is very, very less. Therefore, merit or demerit, that is another debate. But size of judiciary itself is so less that the case load is not manageable in our country. And Yes, you sir. know all these figures, sir. 70% of the litigation is either by the government or against the government. So where is the failures? just a short reminder to your learned views. I would humbly submit, it is not me. It is honorable judges of the Supreme Court and High Courts, retired judges, who are coming open now when there is a mudslugging against each other. The judges are coming open that yes, the process is very opaque. There have been many extraneous considerations. Those who might have been victim of not becoming the judge, elevation yes, or that, they are openly saying it. And we also know, sir, with all due regards to honorable members of the collegium, that there are some quid pro quo. I don't want to say more than that, because perhaps yes, there have been little more. There have been open things come in the open. The former CJI is saying that yes, I insisted for this particular person, and I said unless you appoint this person, I will not recommend other names, or I will not clear other names. There are records that if you do not clear this particular appointment, we will not recommend further name. Recently, just now, Supreme Court has said if you don't appoint Kripal, we will not send next 5 names. For information, those 5 names are taking oath on Monday. No, that's very good. We welcome. They are honorable judges, and we have a very strong, robust judiciary. Nothing like that. Yeah. I'm not. But the way in which what we are, perhaps, Banarsa, with all great respects, you are my guru also. These are instances of opaqueness and lack of transparency, or demerit being also given some kind of preference, are exceptional cases. They are not majority. So what do you think? Why not judges should invite applications that yes, from this period to this period, we want to appoint 10 judges for this is this a High Court, 15 judges. So even the collegium, High Court collegium or Supreme Court collegium can invite application. There's nothing wrong in that. That can be added to the MOP. Yes. That need not change the system. It's a matter of procedure. You invite application, their judgments argued or judgment rendered if he is a judge. Examine them. There can be even a side-by-side selection search committee which can look into these details. Then they can give their recommendation to the collegium. They can again examine. Because Supreme Court judges, 5 judges, top judges, sir, they have the occasion to scrutinize the judgments of the High Court judges day in, day out. Perhaps rather than a law minister or vice president or president or prime minister also. The merit which speaks through the judgments, and a judge should always speak through the judgment. Like Sachin Tendulkar said, speak through your back, not otherwise. So if the judgments are being examined day in, day out, Supreme Court judges know very well who is writing what. Who is writing good judgment, who is not writing good judgments. There are illustrations like that Himachal Pradesh judgment, when they could not decipher even the English which the learned judge wrote. They had to set aside that case and say, we are sorry, we can't comprehend this. So these are very, very exceptional type of cases. 90% of judges are not bad. 10% will be bad. I'm not. So the 10% will not prove the rule. The 90% good work being done by 90% judges should be appreciated. Unfortunately, what is happening, sir? Good work done by the higher judiciary, there is no way of projecting that. There is no way of publishing that. There is no way of knowing that. So the lack of ignorance sometimes, and media has a very big role in this. Some bad judgment you write, some wrong bail you grant, something sensational case you do not do according to media's report. You are in highlights, you are in the headlines. Why this judge granted bail? He's such a criminal, he's such a thing, etc., etc. So these are the exceptions. We have a right to differ also on the very question of whether the collegium system is right or wrong. But unless a improved system is debated and put in place, then only perhaps we can say that collegium system, in retrospective, this system is better. As of now, what we are discussing is only in the past what has happened.
NJC happened, struck down. Collegium happened, it is working. There are cases of bad selections also. There are cases of good selections also. Thank you. So in my understanding, if the good selections have been more in number, the exceptional cases should be ignored, and perhaps the media can discuss that what the Honorable Collegium thought about this man or woman before selecting him. He is proving to be a disaster. This criticism is welcome. Even the media should do that. No problem in that. But you can't question the system on the basis of the exceptions, which can happen anywhere. Suppose NJC would have been there. These kind of bad selections would have been there also. The law minister, PM or chief minister would have pushed this. Sir, selectively, I would agree with you. As you said, let the system work. What would have been the problem if at least for 10 years or 5 years, a law made by unanimous vote in parliament, after parliament represents the nation, judiciary does not represent the nation. So what would have been a problem if we could examine, we could appoint some judges for 5 years under Judicial National Commission, and if there would have been some malpractices, the Supreme Court was free to struck down any time. Supreme Court came out with basic structure in 73. The Constitution was enacted in 1950. You know very well. They did not allow NJAC to work. To remove a judge from the Court or Supreme Court is impossible in this country. You can't remove a judge even if he's a I'm not talking of remove. I'm talking, suppose the NJAC might have done some wrong appointment, as Collegium has also done some wrong appointment. The Supreme Court could any day Supreme Court could take up the suo motu cognizance of the NJAC and say, no, this system has been disastrous. We are restoring Collegium system. This is against basic structure. But they killed it in the very infancy. They did not allow it to work. That is my consideration. I can, like you selectively agreed with me, sir, I can also selectively agree with you. But then this process of temporary appointments through NJC, given a try, I don't think it would have been a very practical kind of solution. And system has to either it is this side or this side. Anyway, the debate should always go on, because there is always a possibility of improvement. There is always a possibility of good being made better. So we can all have this, no problem in that. Yes, I think we have a learned advocate, Rajak, with us, young advocate, young aspirant. Here also I want to submit one point, sir, that why nobody has thought of an improvisation in this system. And as you have said, Justice Dr. Vineet, sir, that today you have been a justice because of the studies you have done, and the studies you have done was taught by your gurus. Then why anybody from legal studies, not a professor, not anybody from the legal studies structure has been a part of the committee or has been a part of the collegium? They have been, many of the judges are being taught under them. Why they are not a part of that? So such improvisations should also be thought of. You have a point to the extent, Bansali sir, that professors' inputs can be taken, even they can be and should be made judges sometimes, as Professor Bhandari sir rightly said. In USA it happens. The problem in our country is that professors, perhaps with great respects, may not have the practical experience of the cases being decided, argued, etc. They teach law. But how cases are ultimately decided is a matter of practical experience to a large extent also. So professors of eminence, there is a word in the Article 124 and 224, eminent jurist. There is a category provided in the Constitution for selecting eminent jurists. And professors can definitely fall in that category. That is where the advocates who are directly appointed to Supreme Court as Supreme Court judges are taken in that category, that the court finds them to be eminent jurists. So likewise, professors can also be given a chance. And I would agree with you also that professors should be made. Sometimes academic importance, academic knowledge, academic eminence should be given due recognition. And they should be taken as Supreme Court judges directly. And even High Court judges, why not? After all, practical experience will come. Like
For example, me, I was a tax side person. I decided even criminal cases. I decided even rent control matters. I decided all kinds of civil appeals. So you can always study the law. After all, our teachers have prepared us so well. So while you sit on the chair, you can understand any legal controversy, apply the law, apply the precedents, and then render a judgment. आपने जो मुद्दा उठाया कि भाई प्रोफेसर्स को क्यों नहीं चांस दिया जाता या कंसीडर किया जाता, सुप्रीम कोर्ट में तो ये प्रोविजन है एमिनेंट जुरिस्ट, और वो बात तो अब ये है कोई एमिनेंट जुरिस्ट तो वही है जो 5 जजेस मान ले, नहीं तो नहीं है। बस उनको समझ में आ जाए तो एक्स इज एमिनेंट जुरिस्ट, उनको समझ में नहीं आए तो उपेंद्र बख्शी भी एमिनेंट जुरिस्ट नहीं है, नहीं समझ में आया उनको क्या कर सकते हैं। एनीवे, मैंने ये बात 82 में जम्मू में हमारी एक लीगल एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, जस्टिस आनंद, द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वाज चीफ गेस्ट, और उनके एड्रेस के बाद उस इनॉग्रल सेशन के बाद एक छोटा सा डिस्कशन रखा था, ओपन डिस्कशन इन द हॉल। तो मैंने ये पॉइंट रेज किया था उस समय, मैं आप तो आज 2023 में कर रहे हैं, मैंने 1982 या 83, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि सर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो प्रोविजन भी है, हाई कोर्ट में प्रोविजन किया जाए, क्योंकि हो सकता है आप सुप्रीम कोर्ट के लायक नहीं माने डायरेक्ट किसी को, पर हाई कोर्ट में तो मान ही सकते हैं। कंट्री में इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैंने मजाक में कहा था, मैं तो यंग भी था उस समय, खैर 4 साल हुए थे टीचिंग में। आप होते तो हाई कोर्ट थोड़ा ज्यादा भला होता। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ। हंसने लगे सब लोग। मैंने कहा सर प्रोफेसर भाटिया हैं, इंडिया के लीडिंग प्रोफेसर हैं, और ऐसे लोगों को चांस दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत कैंडिडली उन्होंने कहा भाई प्रोफेसर भंडारी, यू हैव मेड ए वेरी वैलिड पॉइंट, and we also discuss this point sometime in our informal meetings, and I will carry your sentiments and I will again discuss with the our brother judges, and for that we need to make amendment in the constitution for 217, article 217, that talks of high court judges. The parliament has to make amendment, but certainly we can explore it in supreme court. खैर वो बात अच्छी हो गई, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब अदर देन ऑनरेबल एडवोकेट होना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक इनपुट बहुत जरूरी है इस जुडिशियल डिस्पेंसेशन। एनीवे, चलिए, थैंक यू। और इस पूरे डिस्कशन में जो जब हमने प्रोफेसर्स की बात की, तो एक बहुत अहम जो इस पूरे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है वो एडवोकेट्स भी होते हैं, उन पर भी बात की जानी बहुत जरूरी है। और आज हमारे पैनल में एक बहुत ही यंग एडवोकेट रजाक हैदर मौजूद है। सो सर, आई वांट टू कम टू यू, और ये जो प्रोसेस कॉलेजियम में एडवोकेट्स के नेम पिकअप करने का है, क्या आपको लगता है कि वो प्रोसेस फेयर है, ट्रांसपेरेंट है? क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी की बात लगातार चल रही है, और क्या इस प्रोसेस से आपको लगता है कि मेरिटोरियस और डिजर्विंग जजेस आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है हमारे देश में एक से बढ़कर एक एडवोकेट्स हैं और बहुत जबरदस्त एडवोकेट्स हैं, लेकिन क्या ये प्रोसेस ठीक है? धन्यवाद वरुण जी। जिस संदर्भ में हम ये बातचीत कर रहे हैं, उस संदर्भ में बड़ी सफाई से एक बात कही जा रही है कि सारा जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें देके स्पेशली बुराई या इस कमी की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। वो ये है कि इसमें चहेतावाद आया है, भाई भतीजावाद आया है, या किसी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन कम मिला है, इस तरह की बात आती है। मेरिट की बात मेरे ख्याल से बहुत कम आती है। यहाँ पर हो क्या रहा है, दरअसल सरकार की तरफ से जो अभी बयानबाजी हुई, जिसके बाद हम ये इस माहौल में चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, उसका मूल जो मुझे समझ में आ रहा है या मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसको बदल दिया जाना चाहिए। जबकि जिस रेफरेंस में या जिस बैकग्राउंड में हमने कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1993 में, उस समय भी हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जुडिशरी स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र नहीं टिकेगा। और वो जो सब्जेक्ट है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि आज न्यायपालिका को स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है, आज तो सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फिर आप कॉलेजियम सिस्टम को पूरी तरह से हटाने की और एनजे को दूसरे जो कवायद जो सारी प्रोसेस हुआ है उसमें सरकार जो है अपना हस्तक्षेप चाहती है। मैं समझता हूं कि अगर कॉलेजियम सिस्टम, सवाल इस तरह से रखा जाता है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से सही है, इसका जवाब होता है कि नहीं, सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है तो बदल दिया जाए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बनता है। जबकि ऐसा नहीं है,
सवाल यह है कि बिल्कुल कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें कुछ सुधार होने चाहिए। सुधार किस किस स्टेज पे क्या क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करनी चाहिए। सरकार चर्चा को, पहले सवाल का जवाब जैसे ही ये मिलता है जनता से, या जनता से ये जवाब चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, तो वो दूसरा अपनी तरफ से बात रखी जाती है या रखने की कोशिश की जा रही है, पूरे सिस्टम को बदल देना चाहिए। और उसमें सरकार उस बदलने के मूड में क्यों है कि अपना हस्तक्षेप चाहती है। मैं समझता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी और है आज भी। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जब कॉलेजियम सिस्टम अपनाया था उसके बाद से कई सारे बदलाव सिस्टम के अंदर हुए हैं। अभी हमने देखा होगा सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ था कि सरकार ने अपॉइंटमेंट को लेकर जो ऑब्जेक्शन बताए अपनी तरफ से कि हम उनके पर्सनल व्यूज की वजह से हम उनको अपॉइंट नहीं देने की इच्छा रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे ऑब्जेक्शन पब्लिक डोमेन में डाले। कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी तरफ से इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंस बनाने की कोशिश की है। अभी 3-4 साल पहले तक हमारे जो नाम जाते थे अपॉइंटमेंट के लिए वो पब्लिकली नहीं होते थे जब तक कि उनका वारंट नहीं आता राष्ट्रपति से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नाम अप्रूव करता है सबसे पहले वो नाम पब्लिक डोमेन में आते हैं, उसके बाद में उनका प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की धीरे धीरे कोशिश की है, धीरे धीरे उसमें प्रोसेस हो भी रहा है। अभी एक मैटर आया था कि कॉलेजियम सिस्टम जो पत्राचार करता है, कॉरेस्पॉन्डेंस करता है सरकार से, क्या वो आरटीआई में मिलने चाहिए। इस पे भी खूब डिस्कशन चला कि वो होने चाहिए या बहुत उनकी प्राइवेट उसमें रहेगा। तो धीरे धीरे कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की तरफ सुप्रीम कोर्ट बढ़ा है और मैं समझता हूँ वो उसकी गति बहुत धीमी है, उसमें बहुत तेजी होनी चाहिए उस कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की। जैसे अभी सर ने अभी बात की कि पहले एप्लीकेशन इनवाइट करने का ऑप्शन है, इस तरह की हजारों चीजें हो सकती है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह का माहौल बना रही है उसका एक ही ऑब्जेक्ट लग रहा है, क्योंकि सामान्य जनमानस में इस तरह की धारणा बनाई जा रही है कि कॉलेजियम सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है या 2.5 करोड़ मामले लंबित है, इस तरह की खबरें बीच बीच में आती रहती है, जैसे कि सिर्फ इस वजह से ही लोग परेशान हैं। आम जनमानस में जो धारणा बनाई जा रही है, धारणा बड़ी आसानी से बनती है जिस तरह से सिस्टम में चलता है कि करोड़ों मामले लंबित है और हमारा ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है दुनिया में, जज ही जज को बनाते हैं और इस वजह से कुछ परिवारों के लोग जज बने, इस तरह की बातों को इस एक गलत वे में प्रेजेंट किया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इस सिस्टम में बिल्कुल सुधार की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस सिस्टम को हटा के दूसरे से, यानी इसमें अगर कुछ कमी है तो हम दूसरे एक बुरी कमी वाले बुरे की तरफ बढ़ जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो यहाँ पर आज की इस डिबेट में बहुत सारे ओपिनियंस हमने देखे और बहुत इन सारे ओपिनियन से बहुत कुछ अच्छी चीजें निकल कर आई। सबसे अहम जो चीज रही कि हम इम्प्रोवाइजेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और अगर ये इम्प्रोवाइजेशन किया गया तो कोलिजियम सिस्टम भी बेहतर हो सकता है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि दूसरे देशों को भी स्टडी करके हम कुछ इम्प्रोवाइजेशन ला सकते हैं, इसको और बेटर बना सकते हैं। और आज हमारे साथ इस डिबेट में प्रोफेसर डॉक्टर M.K. भंडारी, जस्टिस डॉक्टर विनीत कोठारी और एडवोकेट रजात हैदर साहब जुड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गहराई से हमने लोगों को भी समझाने की कोशिश की कि क्या बेहतर हो सकता है और अभी जो हो रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज हैं और इसको सुधारा कैसे जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। सबकी तरफ से मैं धन्यवाद दूंगा वरुण को कि इस वार्तालाप को, संवाद को बहुत अच्छे तरीके से आपने संचालित किया। निश्चित रूप से हमारे मतभेद या भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, वही लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के विचारों को समझें, उनको सम्मान दें, सहमत हो या नहीं हो। लेकिन ये आज की परिचर्चा बहुत अच्छी रही। सभी हमारे विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने विचार खुलकर रखे, मैंने भी अपने विचार खुलकर रखे, और कोठारी साहब ने भी बहुत संतुलित तरीके से, और रजाक भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचारों को कहा। और सुधार की आवश्यकता हम सब ने मानी है कि यस, द रिफॉर्म शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं आप मेरे और वरुण के आमंत्रण पर आपने समय निकाला, तो मैं आप सबको मेरी ओर से भी और राजस्थान संवाद की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।